हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 16। चलो फटाफट पहले कमेंट में क्या बताना है। रीडिंग की ब्लैंक कितनी सॉल्व की, रीडिंग एंड राइटिंग की कितनी सॉल्व की, समराइज स्पोकन टेक्स्ट कितने की अब तक आपने, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है यार। और फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग, कल आपका कितना स्कोर आ रहा था अप्रॉक्स, यानी आप अगर 4 ब्लैंक थी तो 4 में से आपका कितना जा रहा था वो स्कोर। 4 में से 2 सही, 4 में से 4 सही, 4 में से 3 सही, ओवरऑल 25 थी। 25 में से आपकी कितनी सही गई वो सारी कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, अगर आपका कम स्कोर आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। हम ज्ञान भी बांटेंगे, कॉन्फिडेंस भी बांटेंगे। ओके, डोंट वरी, पीटी इज़ अ वेरी इजी एग्जाम। ओके पीटी, आप पहले एक चीज़ समझ ली, पहला एक चीज़ समझ लो, आप जो फॉरेन जा रहे हो ना, वो आप ये एग्जाम की वजह से नहीं जा रहे हो। आपने अब तक जो पढ़ाई की, आप 12th पास हो, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, इन सब चीज़ों की वजह से आप फॉरेन जा सकोगे। इट इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट। ओके, पीटी की एग्जाम इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट। यू रिक्वायर मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट भी क्या क्या चाहिए वो भी हम बता सकते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट ऑन एंड यू गो फॉर दैट। लेकिन पीटी एक सिंपल प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है, आप उसको इतना हाइप मत करो। ओके, आप उसकी इतनी चिंता मत करो। ओके, आप रीटेकर में हो, आपको लग रहा है ये बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, नहीं, इट इज़ अ वेरी इजी एग्ज़ाम। ओके, टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, हाईलाइट, करेक्ट, समरी। ओके, अब थोड़ा हम रिवाइंड करते हैं। एक टॉपिक आया था राइटिंग में, फटाफट चलो मन से बताओ, राइटिंग में कौन सा पहला टॉपिक आया था? समराइज रिटन टेक्स्ट। उसके अंदर 5 रूल मैंने बताए थे। अगर वो 5 रूल आपको नहीं पता है तो समराइज रिटन टेक्स्ट का वीडियो जाके एक बार फटाफट देख लो। वही 5 रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करने के हैं, वही 5 रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करने के हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर पूरा एक पैसेज पढ़ना होता था और वो पैसेज को एक लाइन में लिखना होता था, करेक्ट? यहाँ पे ऐसा ही एक पूरा पैसेज आपको सुनाई देगा। ओके, आपको ऐसा ही एक पूरा पैसेज सुनाई देगा और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये 4 ऑप्शन में से वो पैसेज को अगर मेरे को समरी करके लिखना हो, यानी वो पैसेज पूरा मुझे एक लाइन में समझाना हो, तो क्या होगा, और उसे मेरे को टिक करना है, यानी एक टाइप का एमसीक्यू। ओके, टाइम कितना लेना है? 0 सेकेंड्स। ऑडियो ख़त्म हो गया, आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए। ओके, तो अब अगर आपने वो 5 रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पॉज कर लो और पहले वो वीडियो देख लो। ओके, पॉज कर लो, पहले वो वीडियो देख लो। वो होगा डे 6। डे 6 से समराइज रिटन टेक्स्ट, उसमें वो 5 रूल फटाफट देख लो, फिर वापस यहाँ पे आओ। ओके, चलो, जिसने देख लिया है वो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। रूल के अंदर थोड़ा हमने बताया था कि आप नाम नहीं ले सकते हो, डैश नहीं डाल सकते हो, एंड नहीं डाल सकते हो, मेन तो क्या था, नंबर नहीं डाल सकते हो, प्रॉपर नाउन नहीं डाल सकते हो। ओके, ऐसा कुछ हमने बताया था रूल के अंदर, तो वही वो यहाँ पे भी फॉलो होंगे। तो अभी तो हमने ऑडियो सुना भी नहीं है, पर हम कुछ चीज़ों के लिए श्योर हो सकते हैं कि जैसे वेरियस फैक्टर, द फैक्टर्स जियोलॉजी बिटवीन, यहाँ पे सिटी का नाम दे रहे हैं न्यूयॉर्क एंड शिकागो, प्रॉपर नाउन है, हटा दो, ऑप्शन आएगा ही नहीं आंसर। पहला ही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे याद दे रखे माउंट एवरेस्ट, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके पास। आपके पास बचे फर्स्ट और थर्ड, आपके पास ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बचा। अब हम ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो सुन के हम डिसाइड करेंगे कि पहला आंसर है या तीसरा आंसर है। ओके, इन दोनों में से ही होगा। ऐसे करके हमारे 2 ऑप्शन तो कम हो गए ना, ये ट्रिक याद रखना। ओके, वो रूल देख लेना जो 5 हमने किए, और ये ट्रिक याद करना, इजीली आपका हाईलाइट करेक्ट समरी में स्कोर आ जाएगा। हाईलाइट करेक्ट समरी 2 चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है, लिसनिंग तो है ही है, पर साथ साथ में रीडिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो रीडिंग में अच्छा स्कोर आ सकता है, होता है 1-1.5 मार्क का ही है, पर रीडिंग में ही है भाई, आपका टिपे टिपे सरोवर भरा है, यानी आपको बूंद बूंद की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग की ब्लैंक्स आप सॉल्व कर रहे हो डेली, आपको खुद को समझ में आ रहा है, मजाक नहीं है वो। ओके, तो ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, एक ऑडियो सुनते हैं फटाफट। Based on the strength of Earth's gravity and the density and strength of rock, in principle, you could make a single conical mountain that stretched between New York and Chicago and soared over 45 kilometers. That's twice the size of Olympus Mons and definitely dwarfs Everest. However, there are a couple of reasons why we can't actually have that humongous of a mountain here on Earth. For one, Earth's crust is made up of continental plates that essentially float in the semi-solid rock of the mantle below. If you add more weight above the surface, they sink lower into the Earth's hot interior, and when they sink far enough, they soften and basically melt. For our conical mountain, that gives a
a new height limit of just 15 kilometers. As well, the powerful collision of two tectonic plates, which creates mountains in the first place, also fractures and cracks the rock, weakening its structure and exposing it to erosion. Over millions of years, freeze-thaw cycles pry at these cracks, while winds claw at the slopes and streams and glaciers carve deep valleys in the mountainside, all weakening the mountain's support. This can end badly. For example, a 3,764-meter tall Aoraki Mount Cook in New Zealand had its top fall off one night in 1991, trimming it down to a 3,754-meter mountain. Given all the factors that conspire to limit the height of mountains, for example, sinking into the Earth's mantle, fractures, and erosion, I wouldn't bet on our tallest mountains getting much taller than they already are. कितने सारे नंबर्स थे इसमें, कितनी सारी चीज़ें बताई थी इसमें. क्या लगता है, ए या सी? मेरे को ए लगता है. उसका दूसरा रीज़न कि पहला रीज़न तो ये था क्योंकि उसमें क्लियर सुनाई दे रहा है कि ये चीज़ के बारे में ही बता रहे हैं. सेकंड रीज़न अगर शॉर्टकट बताओ तो सी की लास्ट लाइन पढ़ो. अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च. आपने अगर वो वाला वीडियो डे 6 का अच्छे से देखा है, उसमें मैंने क्लियर बोला है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू सर्वे, फॉर एग्जांपल वाले लाइन नहीं उठानी है, वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है. तो मुझे आंसर ए लगता है. ओके, मुझे आंसर हाँ ए आंसर. ओके, तो आई थिंक आपको हाईलाइट करेक्ट समरी समझ में आ गया है. हाईलाइट करेक्ट समरी के अब कुछ ऑडियोज़ आपके पास आएंगे. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में 1 या 2 ही आएगा, पर आज का दे दे, एक दिन में ख़त्म कर दो नहीं यार, फ्री के मार्क्स हैं, ले लो. मिलते हैं अपन कल. Today, we're going to delve into the fascinating journey of human language evolution. Human language, distinct from other forms of communication in the animal kingdom, has undergone a remarkable transformation over millennia. Originally, our ancestors likely relied on simple sounds and gestures. These basic forms of communication were sufficient for their survival needs, like signaling danger or locating food sources. As human societies evolved, so did their need for more complex forms of communication. The development of structured languages, complete with syntax and grammar, marked a significant leap in this evolution. This complexity allowed for the expression of abstract ideas and the sharing of knowledge across generations, fundamentally altering the course of human development. One of the most pivotal moments in language evolution was the advent of written language. This innovation enabled the recording of history, the formulation of laws, and the dissemination of knowledge far beyond what was possible with oral tradition. Interestingly, the diversity of written languages, from cuneiform to hieroglyphics, reflects the diverse ways in which different cultures approached communication and record-keeping. In the modern era, the evolution of language continues at a rapid pace, influenced by globalization and technology. The Internet, for example, has led to the emergence of new forms of language, like Internet slang, and has facilitated the spread of languages across the globe. However, this has also raised concerns about language homogenization and the loss of linguistic diversity. In conclusion, the evolution of human language is a testament to our species' adaptability and ingenuity. It's a journey that mirrors our own evolution as a species and continues to shape our world in profound ways. Welcome to today's lecture on photosynthesis, a fundamental process that sustains life on Earth. Photosynthesis, performed by plants, algae, and some bacteria, is the process of converting light energy into chemical energy. This process not only provides food for the organisms that perform it, but also produces oxygen, which is crucial for the survival of most life forms on our planet. Let's delve into the mechanics of this process. Photosynthesis occurs in the chloroplasts of plant cells. Here, chlorophyll, the green pigment in plants, captures light energy, which is then used to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. This glucose serves as vital energy for plants and, in turn, for the animals that feed on them.
The impact of photosynthesis extends beyond just feeding plants. It plays a significant role in regulating our planet's atmosphere. The oxygen produced during photosynthesis replenishes the Earth's oxygen supply, which is essential for aerobic respiration in animals. Moreover, photosynthesis is a key factor in the carbon cycle, helping to absorb carbon dioxide, a greenhouse gas, from the atmosphere. In summary, photosynthesis is not just a plant process, it is a cornerstone of life on Earth. It supports food chains, contributes to the oxygenation of the atmosphere, and plays a critical role in mitigating climate change by absorbing carbon dioxide. Welcome to today's discussion on the breakthroughs in renewable energy sources, a field that has seen significant advancements in recent years. Our focus today is on three main types of renewable energy: solar power, wind energy, and hydropower. Solar power has made great strides with the development of more efficient photovoltaic cells. These cells convert sunlight directly into electricity, offering a clean and sustainable energy source. The reduction in the cost of solar panels has made this technology more accessible than ever before. Wind energy, harnessed through wind turbines, has also gained momentum. The evolution of turbine technology has enabled the capture of wind energy more efficiently, making it a viable option for large-scale electricity generation. Countries around the world are increasingly investing in wind farms, both onshore and offshore. Lastly, hydropower, one of the oldest renewable sources, continues to evolve. Modern hydropower plants are not only more efficient, but also aim to reduce environmental impact. Advancements in turbine design and dam construction have significantly improved the efficiency and sustainability of hydropower. In conclusion, these breakthroughs in renewable energy sources are crucial in our transition towards a more sustainable and environmentally friendly energy future. Today, let's immerse ourselves in the fascinating world of oceanography and marine biology. We begin with the exploration of the deep sea, a realm once shrouded in mystery. Recent technological advancements have enabled us to probe deeper into the ocean than ever before. Sophisticated submersibles and remotely operated vehicles have been instrumental in this endeavour, allowing scientists to study underwater ecosystems, even in the most extreme environments. Next, we'll touch upon marine biology's progress in understanding coral reefs. These vibrant ecosystems are not just beautiful, they're crucial for marine life. Innovative techniques in underwater imaging and data collection have vastly improved our knowledge of coral biology, their complex relationships with other marine species, and the impacts of climate change on these fragile ecosystems. Another key area of focus in marine biology has been the study of marine mammals. Techniques like satellite tagging and acoustic monitoring have revolutionized our understanding of the migration patterns, social structures, and communication methods of species like whales and dolphins. This research is crucial for conservation efforts as it provides insights into the effects of human activities on these creatures. Lastly, we'll explore the rising concern over ocean pollution and its impact on marine life. From microplastics to chemical pollutants, the health of our oceans is under threat. Marine biologists are at the forefront of researching these impacts, advocating for policies to protect our oceans and developing methods to mitigate this crisis.
In this session, we will explore the history and evolution of global trade, a phenomenon that has shaped civilizations for millennia. Trade began as early as in ancient times, with communities bartering goods and services. This rudimentary form of trade was based on direct exchanges and was limited by geographical boundaries. As societies progressed, so did trade methods. The Silk Road, an ancient network of trade routes, connected the East and the West, facilitating not just the exchange of goods like silk and spices, but also ideas and cultures. This period marked the beginning of international trade, although it was still constrained by long, perilous journeys and the complexities of different trade laws and currencies. The age of exploration in the 15th and 16th centuries further expanded trade routes. European explorers like Vasco da Gama and Christopher Columbus discovered new lands, opening up trade on a scale never seen before. This era saw the rise of colonial empires and the establishment of trade colonies, which had a profound impact on the global economy and indigenous populations. With the Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries, trade underwent another significant transformation. The advent of mechanized production and the development of better transportation, like steamships and railroads, revolutionized global trade. Goods could be produced on a larger scale and transported more efficiently and quickly across the world. In the 20th and 21st centuries, trade has become increasingly globalized. Advances in technology, communication, and transportation, along with international trade agreements, have created a highly interconnected global market. Today, global trade is a complex system influenced by a multitude of factors, including economic policies, international relations, and technological advancements.